So we were doing India, Israel. हाँ, वेस्ट एशिया में ही फोकस था, इजराइल पे है ना. दिखाओ एक मिनट. ओके, सो बेसिकली West Asia has strategic importance, obviously economic importance. Mostly we feel as if it has economic importance, but it has a huge strategic importance. And when British were ruling in India, West Asia and South Asia was a single strategic space, and they were commanding the security of the entire region. Because if any instability happens in West Asia, it is going to have repercussions here in all aspects. Even it will affect our economic interest. Fine. And West Asia is a challenging area. Why? Because there are so many internal fault lines. Internal fault lines, and they are increasing more and more. Fine. Fault lines are there since the end of Cold War, or sorry, since the end of Second World War, but it has increased many times more. So now in the West Asia there are three major pillars. First is Israel, second is Iran, third is Saudi Arabia. So if you look at approach of the current policy or current government, they are very pro-Israel. Fine. Now, even when Vajpayee was a prime minister, he said that Israel is India's natural ally. The thing is, Israel is important, but for a country like India, no country can be called as a natural ally, because India is too big to be a junior partner of any country. And we are placed in such neighborhood that it is not very easy for us to seek alliance with one at the cost of other. So West Asia is a place where we should go for refining our policy of non-alignment, not involving too much in their domestic affairs, plus not creating an impression that we are aligning. Though present government or BJP as a party, it always had lot of inclination towards Israel. And over a period of time, what change is being witnessed, that earlier our relationship with Israel was not so explicit. Fine, because Israel is a isolated country in a way, but now it is becoming more and more explicit, as Modi being the first prime minister to go for a standalone visit. During the time of Modi, again Israeli prime minister visited. So these official gestures, or something like India needs a policy, counter-terrorism policy like Israel, so that is the main difference that is happening. Fine. So you can just write one thing, that what is a difference in the approach of present government in dealing with Israel. So as far as first to write Congress policy. Congress policy. Congress policy is, right, even Congress had close links, they had always maintained close links with Israel. Yet the policy was to keep the relations in closet, छुपा के रखना था, ऐसे बहुत एक्सप्लिसिट नहीं करना था.
ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो पॉलिसी ऑफ बीजेपी राइट टू ब्रिंग the relation out of closet, bring it in public. ठीक है, अब लिखो how to see BJP's approach, how to look at the approach of BJP. They did the right thing or not? Bringing it out of closet. That was not very intelligent gesture, fine. So you can write that considering India's stakes in Gulf as well as with Iran, it may be not a right gesture. Right? However, it can be said that India is becoming more confident. उसको तुम कैसा कॉन्फिडेंस भी देख सकते हो, इसमें लिखो राइट इंडियाज लव फॉर इजराइल, India's love for Israel has been an open secret. So there is no harm if you bring it openly also. ठीक है, अब लिखो right at present conditions are also most favorable to strengthen the partnership. अब क्यों मोस्ट फेवरेबल है इजराइल के साथ, लिखो राइट एट प्रेजेंट देयर इज एन अलाइनमेंट which is going on between Israel and Saudi Arabia. ठीक है, second point, at present Palestinian issue is a deserted or orphan issue. Deserted, DESERTED, nobody is talking about, क्योंकि ISIS crisis in Syria, तो Palestinian issue को rallying Palestinian issue is not of, so India was just rallying the Palestinian issue, fine, but right now the winds are blowing in a different direction, so even if you go for sidelining the Palestinian issue, it is the best time. So despite all these things, yet it was not a very wise step to have the relationship very explicitly. It depends upon how others take this particular relationship. Have you understood this? Now write, ऐसे लिखो, is there any domestic determinant? Is there any domestic determinant which shapes India's policy towards West Asia?
if this is a question, what will you say? Is the domestic circumstances shape the foreign policy? What is the domestic connection between West Asian policy and West Asia and India relation? Huh? Okay, more workers are there and we get huge remittances. What else? Huh? Muslim population in India is shaping India's West Asia policy. Is Muslims, do we have any lobby like Israelis have, like Jews have a lobby in USA? Do we have any Muslim lobby? Huh? No, actually. Fine. So domestic determinant, but if you say that the Muslim factor has played the role, that has not been the cause. But is Hindu factor playing the role? Yes. So now Hindu factor is certainly playing the role. Fine. तो अब फर्स्ट लिखो पॉलिसी अंडर कांग्रेस. बता तो रहे. Policy under Congress, right? It has been held that West Asia policy was too much shaped by the domestic determinant. Underline करो domestic में. The sentiments of Muslim minorities and that is why India gave preference to Palestinian cause. And ignored even full diplomatic relations with Israel. Ignored even full diplomatic relations with Israel. You think that is a correct thing? अब लिखो right. अब इसका आंसर लिखो right. It is true that domestic factors play the role, but the reason has not been the sentiments of Muslim minorities. Right? Reasons have been entirely secular considerations. Underline secular. Secular कौन से? First, India's energy security. Second, proximity. Next, diaspora. Next, remittances. So Gulf is giving, Israel is taking. Fine. तो ऐसा कुछ था नहीं कभी भी. It was like that. फिर लिखो right. In India, there is no Muslim lobby like Jewish lobby
or Indian lobby in USA. अब लिखो why India gave preference to Palestinian cause. Over creation of Israel. India has favored Palestine and opposed the creation of Israel. Why? पंडित नेहरू को क्या हो गया? वही तो नहीं है, इसी तो समझना है. Why India favored? ठीक है. अब इसी में लिखो राइट. Do you think opposition was principled or pragmatic? प्रिंसिपल्ड था, कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड हम लोग ले रहे थे, वो हमारा कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड था? हाँ, सेक्युलर. सेक्युलर से क्या लेना देना? यस. अब लिखो राइट. राइट. गांधी अपोज्ड, Gandhi and Congress opposed the creation of Israel because of Pakistan factor. Right? Religion cannot be the basis. ठीक है. अब लिखो व्हाट इज द रियल कॉज. गांधी भी तेरे बेवकूफ थोड़ा कि जस्ट प्रिंसिपल फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल नहीं करते थे गांधी. ठीक है. व्हाट वाज द रियल कॉज? राइट. राइट. इट वाज अंडरस्टूड दैट क्रिएशन ऑफ इजराइल will destabilize, creation of Israel will destabilize the entire Middle East, which is never in the interest of India. Principled stand बोला जाता है, लेकिन असलियत वो रीजन नहीं था, क्योंकि कुछ भी ऐसा होने से there is going to be problems in India, so we had this particular stand. ठीक है. अब next लिखो right. Right. However, at present, right, we can say that we can say that domestic considerations are playing the bigger role. हालांकि ये सब ज्यादा लिखो मत, क्योंकि ये सरकार बन जाएगी फिर से. ठीक है. इनके लिए भी यही बोल दो. This shows Modi's confidence and all. ठीक है, in dealing with the world. लेकिन आज के टाइम में डोमेस्टिक कंसिडरेशन ज्यादा है. पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व या आरएसएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन द फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. अब इसमें लिख देना मतलब अपनी तरफ से कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट नेवर प्लेड अ रोल. फाइन. अब इसमें इसको सब्सटैंशिएट भी कर सकते हो. यू कैन राइट दैट. राइट. We can say that foreign policies of the countries are always
based on secular considerations, geopolitical interests, secular considerations and geopolitical interest, geopolitical, geo-economic interest पे होती है, right? Right? For example, Gulf countries always tried to maintain a principled distance between India and Pakistan. Principled distance. Fine. Up next, right, there is a considerable improvement in India's relations with Gulf countries. India's relations with Gulf countries, including Qatar. Qatar, 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 Saudi Arabia, UAE. Qatar or Saudi Arabia, they are very opposite to each other. But one success of Modi government is in West Asia, that yes, there is a deepening of relations with Saudi Arabia, UAE. Obviously, there will be some limitations. For example, the response of OIC was not as it was expected, but that is understandable. But Saudi Arabia did played role and did helped India in some of the dealings with Pakistan through back channel diplomacy, and there is a deepening of this relationship. And the visit of Saudi Arabian king here, or this shows that they also want to maintain the two-track or a principled distance. So even if India had relations with Saudi Arabia, it had never impacted India and Iran relation. And India's relation with Israel, they also are rational enough to understand it doesn't impact. Fine. So foreign policies are not based on these irrational considerations, and they are not supposed to be based. And maybe there is a danger if we go for under too much influence of RSS. If you go on basing these policies, that can be detrimental. तो अगर हम foreign policy देखते हैं, तो foreign policy में it appears as if Congress policy was more mature than BJP's policy in all aspects. They were more mature in dealing with many things. बहुत बड़ा मतलब बहुत high profile नहीं रहता था, लेकिन कांग्रेस की policy, foreign policy is more mature. In fact, policy of all policies have been good only. Only implementation and corruption has been a problem. Policy उनके हमेशा better रही है, इनकी policies नहीं better है, ठीक है? This reaction of OIC is because of maybe Pakistan, because Pakistan is the most Congress. भाई ठीक है, इस religious sentiment तो रहेगा ही रहेगा ना. अब कोई भी country किसी को भी complete freedom नहीं दे सकता. You cannot say every, like Saudi Arabia या कोई भी, सभी लोग they will always extract some concessions. It is always give and take. ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिया की पूरी बात मान ली जाए, क्योंकि कभी इंडिया बहुत नियर चला गया ईरान के, तो they would require Pakistan as a balancer. तो यही तो art of diplomacy है, that you should know what is the limit, which limit you don't know to, you should not be crossing. And
retaining the bargaining edge. Have you understood this? Fine. So now let us see India and Iran relations. So first of all, importance. Importance तो है first of all proximity. In comparison to Saudi Arabia and all, we are closer to Iran. Next, it made more economic sense to import oil from Iran. Right, much of Indian refineries have been built. Password here. Have been built for refining Iranian crude oil. Iranian crude oil. ठीक है. Next, India had agreement with arrangement with Iran. Agreement with Iran for payment in rupees. इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने पता नहीं क्या किया. पेमेंट इन रुपीस. रुपीस में पेमेंट करना हमारे लिए कितना फायदेमंद है. ठीक है. और ये सब अरेंजमेंट होने के बाद भी वी स्पॉइल्ड दैट रिलेशनशिप विद ईरान अंडर अननेसेसरी प्रेशर. तो एक तो एस्पेक्ट है. फिर ईरान हैज़ अ ह्यूज जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस. राइट, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस. Iran, in the entire West Asia, Iran is the most important country. It is also a most powerful country, and you should not forget the extent of Persian Empire once. Persian Empire एक ज़माने का सबसे बड़ा empire था, और Iran has a strong, very huge soft power also. Many of Indian languages, including Hindi, Urdu and all, they have origin in Persian script. So Iran has a hard power. Iran has a soft power. And up till now, USA has not been able to weaken Iran or Iranian spirit. तो मिडिल ईस्ट में जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो एक्चुअली ईरान ही है. ठीक है. अब if you see the location of Iran, Iran touches Persian Gulf as well as Caspian Sea. On one side it is Gulf, on the other side it is Caspian Sea. So very important from the perspective of energy security. And that is why USA want that Iran should be under its control. Then Persian Gulf is the major sea route. There also USA would like to control, because US hegemony is based on the policy of controlling the sea and controlling the trade route. And if you see the geography of the Persian Gulf, the geography is such that will allow Iranian ships that they can attack and they can protect themselves. So militarily also, and militarily Iran is like a fort. On one side Iran is by, like, much of Iranian population is in the center or towards the north. So on one side
there are mountains, it is covered by the mountains. On the other side is a desert. This side there is the only opening in Iran is with Iraq. Rest of the side it is fort. And that is why USA had gone for war with Iraq, so that US forces are present there. The only point of vulnerability when that is not that easy. So considering its location, touching Afghanistan, touching Pakistan, touching Central Asia, India's only access, if Pakistan denies, the only access India has is through Iran. So, and then Iran does have, and it is also the rising power now. And among all countries in the region, you can say among all Muslim countries, the most technologically advanced and most educated section also lies in Iran. So in future also, that is why US policy is what? Every regional power, if it is a potential to rise, to check the rise of regional power, because if Iran's regional power increases, USA will not be able to dominate. And once Iran develops the nuclear weapon, USA will not be able to maintain its prominence in Middle East. Because if Iran will develop, Saudi Arabia will also develop nuclear weapon, when none of the country would be requiring US forces. And none of the country will be, US will be in a position to bargain with any of the countries. The US foreign policy, one of the objective of US foreign policy around the world is to check the proliferation of the nuclear weapons. Not because they are committed for some international peace and all, but other countries possessing nuclear weapon is a challenge to US hegemony. You can see North Korea. Fine. So, and especially after the Iran-Iraq, after this war with Iraq and killing of Saddam Hussein, US has itself disturbed the balance of power there. The only country that was checking the rise of Iran. And now the entire Shia crescent, Iran, Iraq, Syria, and then Lebanon. And Iran is today in a much better position to increase its influence. So US policy will always be a policy of containment of Iran. And when India and US relations started coming closer, to containment of Iran, you need Iran's containment. Okay? So for containment of Iran, it is very important. पहला तो यूएस का गोल क्या है ईरान में? रेजीम चेंज. और ईरान का इंपॉर्टेंस क्या है? कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, फाइन, एंड वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया. और ईरान, यूएस को इसलिए ये लोकेशन चाहिए ही चाहिए. फाइन. And the problem between USA and Iran started in a big way from 1979 onwards. 1979 Islamic revolution took place and the Islamic regime got established here. Fine. Now before Islamic regime, there was a regime of Reza Shah Pahlavi. He was pro-West and he was modernizing the Iranian society. Fine, and there was nothing wrong, it's fine. But
along with modernizing Iranian society, he has left Iranian oil and gas open for exploitation by the Western, British and all MNCs. Fine. So now when he was modernizing Iranian society, certain sections from Iranian society, fine, or those who were the orthodox sections, they thought that it is like attacking their customs and civilizations. Fine. So they didn't approve this modernization. Modernization, this religious aspect, plus within Iran, there was also a huge influence of USSR. Fine. And USSR supported the democracy faction, and this was having the socialistic orientations. Fine. So Orthodox and Democrats, they combined together against the westernizers in Iran. And in 1979, once Islamic revolution established, now Islamic revolution, its legitimacy is based on opposition to West. Fine. So they will never go for favoring West. Fine. Hence, West would always like, what is the aim of Trump? What is the aim of US policy in Iran? Collapse of Iranian regime. ठीक है, तो इनका पॉलिसी है regime change और collapse. तो within Iran there are certain sections जैसे green group, this that, or they keep on provoking the anti-regime elements in Iran. Another thing is, now how to bring the regime collapse? You have to create hardships for the people. So people start feeling that their problem is because of this government, economic hardships. That is why USA will continuously go for economic sanctions. Fine. But if India keeps on taking oil, China keeps on taking oil, EU keeps on taking oil from Iran, their strategy will not work. Fine. Because they are the major importers of oil. Fine. So again, suppose when Iran and let's say Russia, Venezuela, US की पॉलिसी क्या है, ये सब इनके चैलेंजर्स हैं. तो US की पॉलिसी फिर वही रहती है, to keep the oil prices low. Fine. So oil prices low further adds problems and economic sanctions. To fulfill, US has been fulfilling its interest. To fulfill its interest that India should not be taking oil, US had put pressures on government of India, and in return USA did give very lucrative offer of a civil nuclear deal. Along with the civil nuclear deal, there was a further very lucrative offer that India will be in NSG. Fine. So obviously no government can ignore this. Fine. So this is also very important, but US तो bargain करता है. अब in politics you have to make hard choices. ठीक है, इधर जाएगा तो उधर, लेकिन अब वो करना पड़ता है. You don't have any option. You have to make a hard choices. But even in the hard choices, you can, it depends upon how you deal with. Here comes the role of diplomacy. How do you manage this situation? How can you convince? So somehow we could not convince India, our narrative to USA. Rather we
easily fell prey to US narrative. फाइन, तो यूएस ने क्या कह दिया, इंडिया ने जो भी कंसिडरेशंस कहे कि भाई ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर दिस रीजन, पहला एनर्जी सिक्योरिटी, आईपीआई पाइपलाइन, यूएस ने कहा तापी बना लो, ठीक है। दूसरा ऑयल, इन्होंने कहा गल्फ से ले लो। सो इन इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर रिलेशंस विद गल्फ देयर इज अ रोल ऑफ यूएस। तो our foreign policy is not built in South Bloc, it is built in Washington, ठीक है। अभी इंडिया ने, यूएस ने आईटी आउटसोर्स कर दी, हमने फॉरेन पॉलिसी कर दी, इट इज अ गिव एंड टेक, ठीक है। तो ऑयल ले लो, अब इन्होंने कहा सिक्योरिटी इशू, आफ पार्क सिचुएशन, तो यूएस ने कह दिया आईएसएएफ फोर्सेस हैं, तो क्या चाहिए, ये सारे कंसिडरेशंस तुमसे वी आर गिविंग, प्लस इन एडिशन वी आर गिविंग यू एनएसजी, सिविल न्यूक्लियर, व्हाट एल्स डू यू वांट, फाइन। सो इंडिया गॉट स्वेट अंडर द lucrative offer without understanding the need that, or calculating that what if US leaves. India thought US will never leave, okay, US will leave or not leave, but there will be a perfect alignment between USA's and India's foreign policy objectives in Northwest. What is the guarantee? There is no such guarantee. So though it was a hard choice, but we had ignored and we consistently shifted the oil. Even we have started importing oil from US also, right? अब US से oil आएगा, जबकि ईरान के पास ही में oil है, US से लाओगे, लैटिन अमेरिका से ला रहे हो oil, फाइन, और महंगे में खरीद रहे हो बिना मतलब, अपनी रिफाइनरी और सारा डिजाइनिंग यू नीड टू चेंज एक्चुअली। नाउ व्हाट एक्चुअली annoyed Iran? India-Iran relations have never been as it should have been. What actions, while maintaining your relations with India, with USA, still there were few things India could have avoided. First is, India voted thrice against Iran at IAEA, against Iran's nuclear weapon, fine. So first of all, when India itself has made nuclear weapon, what right you have to give? You made nuclear weapon because you felt that your security is under threat. Iran is also making nuclear weapon because Iran feels, but Iran, there was no proof that Iran is making. There have been IAEA investigations also. So there was no such proof as such till that time. Okay, what is India's principal argument? India said that since Iran is a member of NPT, Iran should have followed NPT rules, and India is not a member of NPT, so India was not under obligation. That argument is fine, but what is wrong? Voting against, that was not needed, fine. So this is a shift from India's policy. Now what has been India's policy? Not to vote against, not to support any country specific resolutions, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को नेम किया जाता है, वो हमारी पॉलिसी थी। लेकिन अंडर यूएसए वी शिफ्टेड दिस पॉलिसी, we shifted this policy in case of Iran, we also shifted this policy in case of Sri Lanka, और हमने एक स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट सैंक्शंस
स्पेसिफाई किए। अब जैसे चाइना है, चाइना ऑन इशू ऑफ मसूद अजहर, अब चाइना का आर्ग्यूमेंट क्या है कि वी डू नॉट वांट टू ब्लेम अ पर्टिकुलर कंट्री, फाइन, so that is an intelligence. You should not be pointing out at a particular country. You can go for resolution condemning terrorism, that is fine. So see, China goes for that very mature stand. We had mature stand, we left that mature stand. If you see though voting of that time, India is not even officially ally of USA. There are US allies like South Korea, much closer relations between USA and Pakistan. Still, these countries, they didn't vote against Iran, they abstained. India should have abstained. There was no point voting against. So this was seen in Iran, and in the process we created a space for Pakistan to strengthen its relationship with Iran. अब जब इंडिया ऐसे काम करेगा तो ईरान ऑब्वियसली इंडिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना ही, पाकिस्तान के क्लोजर में जाना ही जाना है. डिस्पाइट द फैक्ट ईरान ऑल्सो नोज द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, बट ईरान वॉन्ट्स टू टीच लेसन टू इंडिया. तो इतना नहीं करना था, सिंपली एब्सटेन करके खत्म करते. तो दिस शोज दैट we came too much under US pressure, or we have not even applied, or we had put all eggs in the single basket and trusted USA so much. So that shows the immaturity of India dealing with Iran. And again we had to shift the trade from Iran. And then another thing for which Iran raised an objection was India launching the spy satellite of Israel. Fine. So these are some objections which they have raised. Now what has been Iran's attitude towards India? So one painful thing that India talks against Iran is Iran's consistent support to Pakistan over the Kashmir issue. But Iran's support does not mean Kashmir is going to Pakistan. Okay? So you needed to be pragmatic. That is not a, like this is the explanation the government may give to the people, but that explanation doesn't seem having any strategic logic. Now, since there is a rivalry between Iran and Saudi Arabia to be recognized as the leader of the Islamic world, Iran does raise a voice at times over the human rights violations in Kashmir. That is also something, a pinch of salt, India feels like that. Fine. But again, you have to accept the human rights violation. Forget Iran. And Iran is not the only country. The third thing is they are going to make all these, but we have to understand the strategic importance. Then even Iran has expressed its concerns after the demolition of Babri Mosque. Sometimes Iranian government does come up with some statements related to these issues. But that is a stagecraft. That is a politics in front of the people, their people or other. But behind this, you should know the statecraft. So we may be ignoring the statecraft for the sake of stagecraft. Have you understood this? So there is a huge synergy of interest. Even Iran putting baskets on Pakistan is a dangerous game, but
considering the isolation and the situation, Iran goes towards Pakistan. In fact, if any country emerges as a natural ally for India, it becomes Iran, not Saudi Arabia, not Israel. Have you understood this? Or after like around 2001, there was a visit of Iranian president that has led to Delhi Declaration. Delhi Declaration, there was a fear in USA that there is a possibility of emergence of Delhi-Tehran axis, and they have doubled their effort to create the differences. Fine. And ईरान का एक हमेशा कंसर्न रहा है, और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हैज बीन अननेसेसरली डिलेइंग द चाबहार पोर्ट, जो ऐसे लगता है मतलब आउट ऑफ माइंड पूरी फॉरेन पॉलिसी चल रही है. तो ईरान ऑलवेज से दैट इंडियाज किबला इज वॉशिंगटन. किबला आई थिंक the place of the direction of worship. तो भाई तुम्हारा खुदा उधर है, इधर तो है नहीं, तो वॉशिंगटन के पीछे इतना जाने का कोई मतलब ही नहीं है. उल्टा यूएस खुद तुम्हारे पीछे आएगा, बिकॉज यूएस के पास ऑप्शन नहीं है टू बैलेंस चाइना, बट इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स ओन इम्पोर्टेंस. अब वो थिंकिंग नहीं है. और ईरान की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ईरान इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लोमेसी. ईरान इज सर्वाइविंग फॉर मेनी रीजंस. और अगर इंडिया का भी कोई कम स्ट्रेटेजिक लोकेशन थोड़ी है, पूरा अरेबियन सी, पूरा इंडियन ओशन है, साउथ चाइना सी की तरफ एक्सेस है, लेकिन इन्हें कभी समझ नहीं आया कि कैसे उसको हम यूटिलाइज करें. हमेशा इंडिया रिमेन्ड कंफ्यूज्ड. तो बाकी कंट्रीज की डिप्लोमेसी और अपनी डिप्लोमेसी जब देखते हैं तो यू विल फील कि एंड इट इज नॉट वेरी इजी फॉर इंडियन डिप्लोमैट्स टू डील विद द डिप्लोमैट्स ऑफ द हाउ प्रोफेशनल दे आर. अब इंडिया डज नॉट हैव रिसोर्सेस, ट्रेनिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इन फॉरेन पॉलिसी. और विदाउट फॉरेन पॉलिसी इवन यू कैन नॉट मैनेज योर डोमेस्टिक पॉलिसी. इज दिस क्लियर? तो नाउ लेट अस सी दिस. एक सिग्निफिकेंस क्या लिखा है लास्ट तुमने? जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. किस किस कॉन्टेक्स्ट में? फर्स्ट यू कैन राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आफ पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान. आफ पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रॉब्लम. नेक्स्ट, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया. Next, India's interest in the Gulf. अब लिखो evolution of the relations. Right, despite historical and cultural connections, strategic convergence, India and Iran relationship has never matched to its potential. Never matched to its potential.
ठीक है, अब लिखो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इसमें फर्स्ट फेज अप टिल 1979, अप टिल 1979 लिखो राइट, ईरान वॉज प्रो यूएस एंड इंडिया वॉज प्रो सोवियत यूनियन या एंटी यूएस, कुछ बन नहीं पाया संबंध, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम 79 to 89 right, there is some improvement in the relations, but not as per expectations. अब लिखो reasons, right, right, the government of Iran looking for its legitimacy, right, has often talked about point number 1, talked about point number 1, Kashmir, Kashmir dash करके, its stand has been pro Pakistan, next, the treatment of Muslims in India, नेक्स्ट लिखो राइट, इंडिया एंड ईरान relations have been limited to oil and gas, फिर इसमें लिखो राइट, ईरान has always supported Pakistan in India-Pakistan wars. However, Iran never stopped the supply of oil during the wars. Right? India had a convenient arrangement of barter trade, convenient arrangement of barter trade. ऑयल एंड गुड्स, एक तो इंडिया सामान कहीं नहीं बिकता, ईरान वाले कम से कम ले तो रहे थे, ठीक है, और बार्टर ट्रेड एंड ऑयल ट्रेड इन लोकल करेंसी। ईरानियंस का तो ऑयल ही जाएगा, इंडियन रुपी लेगा कौन कहाँ से, ठीक है, उनके लिए तो एज गुड एज पेपर ही है। Who will take it? Our currency doesn't have any value. Fine. So maximum what Iran can do? Iran can invest that money in India or go for barter trade. हाँ वही इंडिया से ही तुम यूज कर सकते हो ना, बाहर तो that currency is useless. But still that was in our advantageous position. अब next लिखो after Cold War.
फर्स्ट लिखो राइट, राइट, इंडिया एज इंडिया यूएस and India-Israel relations started becoming prominent India-Iran relations kept on getting overshadowed. थोड़ा सा वीक पड़ गया. Next, Iran has expressed huge displeasure over the demolition of Babri Mosque. Next, India and Iran cooperated in war against Taliban in 2001. इंडिया ने तो मेडिकल मिशन ही भेजा था, ठीक है, बाकी लोगों ने फोर्सेस भेजे थे, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर भेज देते हैं, सोल्जर्स को रख लेते हैं, मेडिकल है कहाँ है, ज्यादा डॉक्टर तो नहीं है ज्यादा, लेकिन इंडिया कोरिया वाले में सब जगह मेडिकल मिशन ही भेजता है, ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो राइट, राइट, टुवर्ड्स 2000, right, towards 2003, India-Iran relations started improving. Right, there was a fear of the development of Iran-Tehran axis. Sorry, fear of New Delhi-Tehran axis. Right, President of Iran visited India. Resulting into New Delhi Declaration, डैश करके लिखो, विजन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अब लिखो राइट, सिंस देन यूएसए स्टार्टेड intervening in the partnership. USA started intervening in the partnership. अब लिखो 2005. डैश करके लिखो, since then US and Iran tensions have grown more as US imposed sanctions. Accusing Iran violating NPT
and developing weapons of mass destruction. अब ऐसे लिखो, यूएस पॉलिसी ऑन ईरान. Right? USA's Iran policy is a part of USA's overall policy to maintain its hegemony. अब लिखो how USA maintains its hegemony. Point number 1, checking the rise of regional hegemon. अब लिखो केस ऑफ ईरान. ईरान क्या है? रीजनल हेजमन है. मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडल ईस्ट. शायद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी बिगेस्ट होगा, है ना. मोस्ट पावरफुल कंट्री इन ऑल टर्म्स, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, एवरी पावर. मोस्ट पावरफुल कंट्री. और इरानियन नेशनलिज्म भी बड़ा स्ट्रांग है. ठीक है, बहुत ज़्यादा होमोजेनस कंट्री है ना, फिर वो माइनॉरिटीज़ उतना नहीं है उसके कंपैरिजन में. जैसे सऊदी अरेबिया, इनके रीजन में देयर सम रीजन्स विच आर इनहैबिटेड बाय द शियास. तो बाकियों का नेशनलिज्म भी उतना स्ट्रांग नहीं जितना ईरान का नेशनलिज्म स्ट्रांग है. ठीक है, तो ईरान इज स्ट्रांगेस्ट. नेक्स्ट, हैविंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन. Strategic location means near Persian Gulf, second near Caspian Sea, तो इट अब लिखो, राइट, टू कंटेन ईरान. USA has to work for collapse of present regime. तो अगर ये न्यूक्लियर नहीं भी बना रहे होते तो कुछ और रीजन होता. इनका तो मेन है कि कोलैप्स चाहिए, कोलैप्स ऑफ द प्रेजेंट रेजीम इन ईरान. राइट, राइट. हेंस US want to create economic hardships. Economic hardships. Next, right, US compelled India to shift the source of oil imports from Iran to GCC countries. Next, right, India had to cancel IPI pipeline in favor of TAPI. In favor of TAPI. Okay. Next, India voted against Iran at
IAEA थ्राइस, तीन बार कोई तरीका नहीं था, ठीक। अब यूएस ने कहा और कोई ऑयल नहीं देगा तो तुमको न्यूक्लियर तो दे ही रहे हैं, अपना बनाते रहना बिजली, ठीक है। और दुनिया भर में न्यूक्लियर के मार्केट हो गए बंद बिकॉज ऑफ फुकुशिमा डिजास्टर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनके यहाँ जो ये रिएक्टर ये करेंगे क्या वो लोग? तो बेस्ट कंट्री कौन सा है? इंडिया। और यूएस के न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर नॉट इवन टेस्टेड, वो सब टेस्टिंग यहीं पे होगी, ठीक है, कि वो प्रूफ है या सिक्योरिटी प्रूफ है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा पता नहीं। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रिएक्टर्स हैं वो रशिया के ही हैं, ठीक है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रशिया के चीपर हैं देन फ्रांस है। यूएस रिएक्टर्स का कॉस्ट भी बहुत, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हायर है। उनका डिपेंडेंसी ऑफ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी बहुत पुअर है। इसीलिए यूएस क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज विद इंडियन सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर फटना तो आई, ठीक है। सो दे वांटेड दैट लाइबिलिटी लॉज शुड नॉट पुट लाइबिलिटी ऑन द सप्लायर, सप्लाई करके निकल दो, फाइन। और उसके बदले में दे वर गिविंग दीज प्रोमिसेस, भाई एनएसजी ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, और सरकार कर रही है अपनी डील। तो बहुत मतलब बहुत खतरनाक वाले काम भी कर दिए सरकार ने। इन्होंने सोचा कि हम डील कर लेंगे, वी विल बी स्मार्ट इनफ, वी विल नॉट ऑर्डर नहीं करेंगे रिएक्टर। तो ठीक है, ना ऑर्डर करें और यहाँ ना आए, वही अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल यूएस ने सब कुछ कर दिया जो इनको चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द करेंट स्टेटस? राइट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट even avoided visiting Iran for NAM summit। इनसे वहां भी नहीं जाया गया, लेकिन फिर इनको जाना पड़ा। मतलब इतना यहाँ पे प्रेशर डाला गया कि भाई ये क्या है, मतलब इतना इनको डर लग रहा था अमेरिका से कि वो लोग क्या कहेंगे। तो ईरान में जब नैम समिट हुआ तो मनमोहन सिंह कॉमनवेल्थ में तो गई नहीं श्रीलंका में कि भाई हम नहीं ये सब रिस्क लेते, फिर अमेरिका वाले नाराज हो जाएं। इसमें भी दैट देयर वाज अ ह्यूज डिले। एंड वेयर वाज नैम समिट? वेनेजुएला। लास्ट समिट कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में। तो वहां पे भी पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो, ठीक है। तो इवन मनमोहन सिंह वॉज वेरी रिलक्टेंट, बाइलेटरल तो वो गए ही नहीं ईरान। इन बाइलेटरल ही वॉज रिलक्टेंट इवन टू गो टू नैम समिट, फाइन। सेकेंड पॉइंट, राइट, हाउएवर लेटर ऑन India realized the importance of Iran once right USA declared that it will leave Afghanistan, ठीक है। अब उसके बाद लिखो, राइट, इंडिया रिन्यूड इट्स इंटरेस्ट इन चाबहार, रिन्यूड इट्स इंटरेस्ट इन, हाँ मतलब अब इन्होंने क्या क्या चालू कर दिया, रिन्यूड इट्स इंटरेस्ट इन चाबहार,
Next, renewed interest in north-south transport corridor. International north-south transport corridor. Next, it started importing Iranian oil. Bracket में लिखो, right? As a result of a deal between Iran and Obama, there was a relaxation of sanctions. Relaxation of sanctions. तो इनका काम दोनों से बन गया. इंडिया के लिए अच्छा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि वाई ओबामा गेव रिलैक्सेशन टू ईरान एंड वाई ट्रम्प हैज टेकन अवे. क्यों किया? देखो राइट, वाई ओबामा गेव रिलैक्सेशंस टू ईरान, why that peace deal with Iran. What happened? Why? देखो right, to counter ISIS. To counter ISIS threat. ठीक है कि भाई ईरान लड़ ले आराम से. ठीक है, यूएस यही कराता है, दो लोगों को लड़ा देता है और खुद निकल लेता है. तो उनको लगा कि फिलहाल ईरान को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं आईएसआईएस को मैनेज करने के लिए, और फिर ईरान को मैनेज कर लेंगे. अब अभी क्या हो गया? अभी आईएसआईएस फिर खत्म. ठीक है, तो फिर खत्म मतलब फिर अब ईरान के बुरे दिन. तो ईरान के अपने अच्छे दिन के लिए ईरान को अपना एक एनिमी बना के रखना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज ऑल्सो एनिमी ऑफ यूएसए. तो आईएसआईएस के रहने से ईरान के अच्छे दिन थे. ठीक है, अब एज सिचुएशंस इम्प्रूव्ड, अब मोदी जी तो बैठे ही रहते घूमने जाने के लिए, चलेगा. लिखो. ठीक है, लिखो राइट. प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड ईरान in 2016. Consolidating India-Iran partnership. ठीक है, फिर वही सब हाई लेवल बायलैटरल विजिट्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ से. सो फाइनली इंडिया हैज एक्वायर्ड अल बहिश्ती पोर्ट एंड ऑल सेक्शन at Chabahar. So now the relationship is coming back on track. Relationship is coming back on track in context of this, and India said India got waiver from the sanctions which have been imposed by Iran on the condition that India will मतलब progressively reduce its dependence on Iranian oil. But again, because global Russia doesn't favor that sanctions. China has good relations with Iran. Now European Union also understands that sanctions on Iran, that also goes against they are also not interested in the sanctions against Iran. So US has imposed unilateral sanctions, unilateral economic sanctions, and these countries
they are trying to find alternative arrangements, for trading with Iranian oil. So even India is not coming under pressure at present, and India is going to continue its oil trade with Iran, because now the situations are such that if we lose Iran again, our interest in Afghanistan will be, uh, we, we will be very in a very adverse situation. And fine, US is okay with India and Iran, because again India can be an interlocutor in a situation of uncertainty. US can also not rely completely on Pakistan in Afghanistan. So I don't know how USA is looking at India, but obviously India and Iran and India can act as an interlocutor from USA's side. Plus, USA would also understand that these are some what exactly is going behind and what is the motivation. But US also notes it's that India, as of now, India said that no, it is not going to follow any sanctions, and India and Iran oil trade, and there is also an agreement to pay in the local currency. Fine. So abhi to you can say that presently क्या क्या लिखा last point? Visited Iran. You already know India has acquired and started operating that Chabahar port. अब next है कि India didn't accept the unilateral sanctions of USA. Right. India and Iran will continue oil trade. In local currency. मतलब Iran taking rupees and Iran taking equipments and other things. So as of now, we have brought this relationship. Recently, you can say that Iran has given pro-India, yeah, in case of Pulwama terror attack, Iranian stand has been in favor of India. But relationship में ups and downs हैं. It is nowhere near the potential. So now we are exploring working together on counter-terrorism, and Iranian support may prove critical if India wants to win the case at ICC also. ठीक है. तो अभी things are fine. Fine. This is a situation. The thing is, we should never lose the sight of how important Iranian relationship is for India's security. Fine. So now let us see India and Gulf relations. First of all, what you can say that up till now, India didn't have close diplomatic relations with Gulf countries. अब लिखो why, right? Looking Gulf
through the prism of Pakistan. Prism of Pakistan. Right? Right? Track 1 was weak, but track 2 was always strong. Track 2, people to people contact थे, diaspora था, trade weight था, remittances थे. This was not that much. अब next लिखो role of Manmohan Singh. Role of Manmohan Singh, right? Manmohan Singh has launched Look West policy. Look West. Underline करो Look West. मतलब right, India had advanced in Look East, but in Look East समझते हो, साउथ ईस्ट एशिया. लुक ईस्ट में तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट को इग्नोर कर दिया, साउथ ईस्ट. तो इंडिया हैड एडवांस्ड इन लुक ईस्ट, बट इंडिया हैड नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सो वेल इन लुक वेस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो राइट. ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, India's relations have improved with Saudi Arabia. Relations improved with Saudi Arabia. इसमें एक significant date है 2006. The visit of Saudi Arabian king resulting into Delhi Declaration. मतलब strategic partnership. Next, 2010, Manmohan Singh's visit resulting into Riyadh Declaration. RIYADH, Riyadh Declaration. तो इसमें कंसोलिडेशन, राइट, कंसोलिडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट, कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, with concrete gains. Concrete gains. So expatriation of some of the wanted terrorists, etc., with the help of Saudi Arabia and back channel diplomacy. Up next, लिखो right. Saudi Arabia also started its Look East policy. Look East policy. अब लिखो why. Right. Saudi Arabia wants to reduce
its reliance on ऑयल एक्सपोर्ट, क्योंकि यूएस का कभी भरोसा नहीं ऑयल किस दाम पे ले आए, ठीक है, एंड दे हैव लॉट ऑफ रिजर्व्स एंड दे लुक द प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, फाइन, एंड इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली ऑफर्स अ नेचुरल डेस्टिनेशन, ठीक है, तो दे वांट टू go for divergence in their economy and not excessive reliance. And over a period of time, the tensions between Saudi Arabia and Trump regime and US regime has also grown more. एक तो Saudi Arabia had opposed Obama administration entering into agreement with Iran because Saudi Arabia knew that this is going to increase the power of Iran. तो उस context में भी, अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प, ठीक है, तो इन अभी सऊदी अरेबिया और यूएस के रिलेशंस, दे आर ट्राइंग टू मैनेज दैट रिलेशंस बट दे आर नॉट ऑन इवन कील, बिकॉज अब यूएस का मेन टारगेट रशिया है और चाइना है, इन दोनों को टारगेट करने के लिए यूएस वांट टू कीप ऑयल, जैसे स्पेशली रशिया, टू कीप ऑयल प्राइसेस लो, तो even if USA doesn't really targeting Saudi Arabia, it gets affected, fine, so diversification of their economy, so Saudi Arabia started dehyphenation between India and Pakistan. Pakistan's limitation importance is limited, and distancing between Pakistan and Saudi Arabia happened for two reasons. That over a period of time, Pakistan's closeness with Iran has increased. And why Pakistan wants closeness with Iran? So that India should not be able to exploit that space. And second thing is, because of this closeness, Pakistan has denied sending its forces to Saudi Arabian mission in Yemen, fine, so these two things had also impacted their relationship, but फिर से नवाज शरीफ आफ्टर दैट ही विजिटेड एंड रिलेशंस केप्ट ऑन, अब हर कंट्री के अपने पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं, तो लेकिन एक ये पर्टिकुलर फैक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया डीलिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसमें इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया शुड बी एबल टू चेक द टेररिस्ट अटैक्स। अब जैसे टेररिस्ट अटैक के कारण क्या होता है, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड दे मे फील दैट इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसको मेंटेन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, fine, so diversification of Indian economy. Up next you can write that presently India's relations with Saudi Arabia have improved considerably, right? Saudi Arabia has become the leading supplier of oil to India. India का biggest supplier हो गया, right? 17% of our crude oil comes from Saudi Arabia. 17%. फिर India is a fourth largest market for the exports of Saudi Arabia, fourth largest market. हाँ, ऑयल एक्सपोर्ट उसमें फर्स्ट चाइना है, फिर यूएसए, फिर जापान और फिर इंडिया।
Next, for India also, Saudi Arabia is emerging as a leading destination for exports. Next, the biggest expatriate community जो इंडियन कम्युनिटी है गल्फ में वो सऊदी अरेबिया में है. बिगेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी 2.7 मिलियन. इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इज इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब में इनके ओरिजिनल की जगह इंडिया पाकिस्तान वाले लोग ज़्यादा हैं. ठीक है, तो इनका अपना हो सकता है. ओरिजिनली विल कम आई थिंक इन माइनॉरिटी. तो इंडिया पाकिस्तान का इक्वल प्रेजेंस है वैसे. तो फिलहाल बिगेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी भी है. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो. राइट रिसेंटली द क्राउन प्रिंस, अभी क्राउन प्रिंस ही है ना, रिसेंटली द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हैज विजिटेड इसमें राइट द जॉइंट स्टेटमेंट has a strong reference towards terrorism, however it does not specifically mention Pakistan. Second, right, at present the trade is, bilateral trade is around 27.48 billion US dollars. Joint statement mentions increasing the trade to 100 billion US dollars. 100 पे लेके आना है. अब नेक्स्ट फिर वही सबका इनका सबका कोऑपरेशन, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप, स्मार्ट सिटी, डिजिटल विजिटल. नेक्स्ट राइट Saudi Arabia will be investing in infrastructure, next cooperation in energy security, skill development, maritime security, next support for India sponsored CCIT.
India sponsored CCIT, Comprehensive Convention on International Terrorism. इंडिया वाले ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे कुछ लिखेंगे, ऐसा किया नहीं, और सेम टाइम विजिट वाज टू पाकिस्तान, और एक सिंबॉलिक था ये शो करने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का हम लिंक करके नहीं देखते हैं. सो द क्राउन प्रिंस विजिटेड पाकिस्तान, वेंट बैक एंड देन अगेन केम. ठीक है, तो वही सब सिंबॉलिक है, बट ठीक है, इट्स ओके. अब नेक्स्ट यू कैन राइट इंडिया एंड यूएई. इसको बहुत अलग से डिटेल की जरूरत नहीं क्योंकि सब में सेम ही चीजें हैं. ठीक है, तो इंडिया एंड यूएई, इसको कह सकते हो कि मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ मोदी गवर्नमेंट. तो यूएई को भी वी यूज टू सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान. UAE and Saudi Arabia were the only two countries other than Pakistan recognizing Taliban, and once we didn't have good relations at all. But Modi government has established good rapport. तो basically UAE जो है, UAE is a most advanced country, और UAE गल्फ में डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में दे आर वेरी एडवांस्ड. तो एक तो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, नेवल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, इट आल्सो हैज़ ह्यूज एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी. तो काउंटर टेररिज्म वाला एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इसके भी कॉन्क्रीट इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो यूएई में व्हाट यू कैन राइट दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which includes cooperation in maritime security, as well as counter terrorism effort. Next, यहाँ पे 2.5 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट या इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, 2.5 मिलियन इंडियंस. ठीक है, यूएई से भी ऑयल या प्लस लिखो, राइट. यूएई इज द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री in defense and space technology. Next, UAE is also diversifying its economy. अब इसमें नेक्स्ट, since the rise of ISIS, counter terrorism has become an important concern. अब नेक्स्ट है कतर. अब right, among all Gulf countries, Qatar maintains a different stand. Right, it is closer to Iran.
closer to Iran. ईरान से, मतलब जोग्राफिकली क्लोजर टू इराक होगा, लेकिन रिलेशनशिप में कह रहे हैं क्लोजर टू ईरान. और ये अभी एंटी यूएस ज़्यादा है, क्योंकि कतर 2-3 चीज़ें रोल प्ले कर रही कतर में. और कतर तो सबसे कह सकते हो कि मोस्ट रिच कंट्री है, and very small population, and they have a huge sovereign fund. They have and Qatar investment जो है company, that is a very very rich company. इनका बहुत very rich country. Now Qatar's prosperity may get impacted with the oil politics of USA. अब Qatar, because of Arab Spring and Qatar, Bahrain, there is a Shia population also. Hence, in order to ensure that this type of rebellion does not take place, Qatar is maintaining good relations with Iran. And there is a lot of anti-West sentiment in Middle East. So anti-West sentiment, and Qatar is going with that sentiment, showing its distancing with USA. And Qatar understands इनके internal issues भी हैं among different kingdoms. And Qatar also understand that in coming time Iran will be a significant power. So Qatar is going for more of a non-aligned policy. They assert their right. So somehow, despite huge tensions between Qatar and Saudi Arabia, Qatar and USA, this can also be seen as a success of Modi government's policy, that Modi also visited Qatar, plus their heads, they had also visited. So we have been maintaining our relations with Qatar. That's a good thing. Now another country which is very very important for India is actually Oman, because Oman's location is, I think, parallel to Iran, and recently India has acquired Duqm port. Fine. So from Duqm port, even Gwadar port is near. तो हमारा जो मिलिट्री और ये सब कोऑपरेशन है वो ओमान के साथ बहुत ज़्यादा है. और ओमान में भी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इंडिया की तो है ही. तो एज अ रिलेशनशिप हिस्टोरिकली भी ओमान से इंडिया हैड नो ट्रबल्ड रिलेशनशिप एट ऑल. ठीक है. तो कतर एज अ कंट्री, इसमें यू कैन से दैट सक्सेस ऑफ मोदी गवर्नमेंट in maintaining relationship with Qatar. So you are managing all the poles. This is good thing. Relationship with Qatar, despite tensions between Qatar and USA, and Qatar and GCC. Next लिखो ओमान. ओमान फिर लिखो राइट मैरीटाइम security. Maritime security. Next, India is building Duqm port, DUQM, Duqm port in Oman, DUQM, right? It is in proximity to Gwadar.
फिर इधर चाइना ने चूंकि जिबूटी में ले रखा है तो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है दुकुम पोर्ट, ग्वादार पोर्ट, GWADAR। नेक्स्ट, इंडिया एंड ओमान कोऑपरेट in Indian Ocean Naval Symposium, IONS, Indian Ocean Naval Symposium, IONS, Indian Ocean Naval Symposium। फिर वही सब में एक ही चीज़ है, स्किल डेवलपमेंट, टेररिज्म, एक्सपेट्रिएट। तो जस्ट लिखो राइट फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर has held that India's look west will match look east, will match look east। ठीक है, अब इसमें लिखो राइट मोस्ट सक्सेसफुल एरिया ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर लॉट ऑफ मैच्योरिटी दे हैव शोन, और यहाँ पे लिखो इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया आसियान bilateral trade is still कितना है bilateral trade? 100 बिलियन के आसपास। लेट मी सी इंडिया एंड आसिया इज इन, और इंडिया गल्फ ट्रेड उससे काफ़ी ज़्यादा है, शायद $150 कितना है इंडिया आसियान बायलेटरल ट्रेड। $81 billion, right? India ASEAN bilateral trade is even less than $100 billion US. Right in bracket around 81 billion US, whereas India GCC trade is already touching $100 billion US। यानी कि इकोनॉमिक सेंस में लुक ईस्ट और लुक वेस्ट में कोई खास फर्क नहीं है, बट लुक ईस्ट की मार्केटिंग ज़्यादा हुई है और लुक वेस्ट में हमारा, इनफैक्ट लुक ईस्ट के कंपैरिजन में लुक वेस्ट के साथ भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट ज़्यादा है। मार्केटिंग गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट की ज़्यादा की है, जबकि लुक ईस्ट के कंपैरिजन में बेनिफिट्स भी लुक वेस्ट से ज़्यादा रहे, और मैच करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट में वी वेयर reluctant and looking these countries through the prism of Pakistan, that has changed। ठीक है, but already our relations with Gulf has been much deeper than that of Southeast Asia। Have you understood this? तो ऐसा कोई मैच ठीक है, but okay fine। अब जस्ट एक लिखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से GCC कंट्रीज या GCC।
GCC कंट्रीज में ये as of now Qatar is suspended, rest of the countries are there in GCC. अब GCC के साथ you can write India is negotiating a free trade agreement. अब GCC itself is not a very strong organization, right? GCC has not been a very prominent organization. But now gaining importance. तो इनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन स्ट्रेटेजिक भी है, उनमें एक डिफेंस फोर्सेस भी हैं, वो पेनिनसुला शील्ड उसको बोलते हैं, ठीक है? तो यू कैन राइट दैट जीसीसी हैज इट्स डिफेंस फोर्सेस आल्सो. known as Peninsula Shield. Peninsula, वो पेनिनसुला है ना, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला शील्ड. अब इस राइट, इट वाज फॉर्म्ड इन 1981. Basically economic common market is the purpose. इससे कोई खास है नहीं इसमें. एक अरब लीग लिख लो, अरब लीग, ARAB, अरब, ये भी अरब लीग, ठीक है? तो अरब लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1945. 1945 in context of that Israel-Palestinian issue. और total number of member countries 22. countries. And where is the head? इसका headquarter कहाँ है? नहीं, अरब उसका GCC का, is it in Riyadh? हाँ हाँ, रियाद में ही होगा ना GCC का. इनका हेडक्वार्टर इजिप्ट. ओके, अरब लीग, यस, कायरो, हेडक्वार्टर इज इन कायरो, दैट्स इजिप्ट, हाँ, कैपिटल. अब इन सब का इनका रोल पैलेस्टीनियन इशू इन सब में रहता है. सो दिस इज इंडिया एंड वेस्ट एशिया. तो अब वेस्ट से चलो ईस्ट, लुक ईस्ट करो, लुक ईस्ट. ट्रैक 1 होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 2 में बाकी आते हैं पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस. तो बिजनेस टू बिजनेस तो बहुत रहा है ना. ट्रैक 1 नहीं था, अभी हो गया, यस, ठीक है. तो चलो लुक ईस्ट, लुक ईस्ट. हाँ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? अब ईरान में सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, फिर बहरीन में है, सऊदी अरेबिया के सदर्न रीजन में जो ईरान से मिलता है, इराक पूरा सुन्नी रीजन है. लेकिन सुन्नी पॉपुलेशन, सॉरी, शिया रीजन है. इराक में मेजॉरिटी शिया की है, बहरीन में मेजॉरिटी शियास की है, सऊदी अरेबिया में जो इनके ऑयल रिच रीजन्स हैं वहाँ पर शिया डोमिनेटेड है. हाँ, ऑयल जो ईरान और सऊदी अरेबिया का
एरिया जहाँ पर मिलता है ना, तो वो शिया डोमिनेटेड है, वहीं पे ऑयल फील्ड्स है, और वहीं से तो प्रॉब्लम है कि साउथ अगर यहाँ पे रिबेल हुआ. व्हाट इज अ प्रॉब्लम बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया? शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इज नो कॉन्फ्लिक्ट है, हेजेमनी भी नहीं. मेन क्या है, ईरान एंड सऊदी अरेबिया had good relations till ईरान was monarchy. ठीक है. अब आफ्टर ईरान became democracy, तो सऊदी अरेबिया fears that the wind of democracy can come and monarchy can collapse. Plus, Iran can provoke the Shias living in Saudi Arabia, and Saudi Arabia may lose its oil rich region. So main conflict, the entire politics in Middle East has changed since 1979, the Iranian revolution. Iranian revolution means democracy in Iran. If democracy comes in Iran, there is always a fear that democracy comes in Saudi Arabia. Fine. तो मेन कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस नहीं है एक्चुअली, मेन नाम रिलीजन का लेते हैं जिससे कि इरानियन इन्फ्लुएंस को वो काउंटर कर सकें. तो फिर उधर लेबनान काफ़ी मिक्स्ड कंट्री है. सीरिया ऑल्सो हैज़ शिया पॉपुलेशन बट नॉट इन मेजॉरिटी. मेन शिया कंट्री इराक है, इराक एंड ईरान. तो इराक में एक्चुअली शियाज के जो मेन रिलीजियस प्लेस ऑफ शियाज आर इन ईरान. This called as Najaf and Karbala. Karbala is in Iraq, हाँ, इराक में ना. तो शिया वालों के लिए रिलीजियस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली इराक है. सो नाउ लेट अस लुक ईस्ट. तो लुक ईस्ट में राइट, ईस्टर्न साइड, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिनेरियो? So in eastern side, right, India meets China. ईस्टर्न नेबर है चाइना, और ईस्ट और वेस्ट सीपेक से हो जाएगा एक. चाइना एंड पाकिस्तान विल बिकम वन. सो ऑन ईस्टर्न साइड इज चाइना. फाइन. तो नाउ लेट अस सी इंडिया चाइना रिलेशंस. नॉर्थ नहीं भाई, चाइना को ईस्ट माना जाता है ना. ईस्ट में जो लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों आई? टू कंटेन चाइना. ठीक है. तो ईस्ट में तो चाइना को ही देखोगे, चाइना से आगे जापान को देखोगे, तो इंडिया का मेन थ्रेट तो चाइना ही है. साइकोलॉजिकली हम लोग को सबसे ज़्यादा डर चाइना से लगता है, क्योंकि चाइना से हारे हो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट है. और वो जो साइकोलॉजी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया चाइना रिलेशंस. तो अब व्हाट इज चाइना? नेक्स्ट क्लास कब है? अब वहाँ है ना, हाँ, यहाँ भी है, इको है, तो कर लेना. अभी तो 5 और किसे वहाँ जाना है? तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस वाला तो जा ही सकता है, वो सब तो सेम ही है, वहाँ पे भी करते हैं. तो फिलहाल इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. व्हाट इज चाइना? चाइना है इमर्जिंग सुपर पावर. लिखो, चाइना इज अ इमर्जिंग सुपर पावर.
दूसरा है चाइना इज चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी। ठीक है, अब जो प्रेजेंटली इंडिया चाइना रिलेशंस हैं, they are shaped by US China relations, fine? Or historically, what type of relations we had? Just write the history of India China relations. Right, since yeah, you can write India and China had been living in peace since centuries. ठीक है, अब लिखो राइट, in 1947 India became independent and in 1949 China came under communism. तो चाइना फॉर्मली इंडिपेंडेंट था, जैसे इंडिया फॉर्मली भी इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसको एक तरीके का इंडिपेंडेंस ही मान सकते हैं। आप लिखो राइट, विद इन फ्यू इयर्स ऑफ बिकमिंग नेशन स्टेट they entered into the border conflict. लिखो, memory of 1962 war still shapes India's psyche, national psyche, PSYCHE, psyche towards China. इतने साल शांति में रहने के बाद लड़ाई क्यों? Who was responsible for 1962 war? Who was responsible? Huh? USA was responsible. Nehru was responsible. अब लिखो, who was responsible for 1962 war? Right, Nehruvian policies. Nehruvian policies. और नेहरूवियन पॉलिसी की प्रॉब्लम क्या थी? कंफ्यूजन, राइट? कंफ्यूजन वाज द प्रॉब्लम, लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं थी। अब लिखो राइट, एट इंडिपेंडेंस देयर वेर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। टू स्कूल्स ऑफ थॉट। पहला सरदार पटेल। स्कूल्स ऑफ थॉट, दो तरीके के थिंकिंग थी चाइना को लेकर। एक था सरदार पटेल, राइट? ही वार्नड पंडित नेहरू about the possibility of war from the side of China. War, right? Even CAG, Comptroller and Auditor General,
warned, even CAG warned Pandit Nehru not to ignore the defense. तो इग्नोर द डिफेंस, डिफेंस इग्नोर मत करो, सबको पता था चाइना वॉर करेगा, पंडित नेहरू छोड़ गए। ठीक है, क्योंकि चाइना का डिजाइन ही एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट कल्चर ही है, और सरदार पटेल को पता था वॉर होनी। ठीक है, अब सेकंड लिखो, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू न्यू द वॉर, राइट, पहला लिखो, राइट, इवन पंडित नेहरू न्यू Chinese ambitions. Yet, he preferred a different option. Right? अब कॉमन सेंस ऑप्शन क्या होता है भाई? डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, उसको हम पॉलिटिकल साइंस की टेक्निकल भाषा में बोलेंगे बैलेंस ऑफ पावर। लेकिन अगर कोई एनिमी है और तुमसे पावरफुल है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। यू हैव टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अ पावरफुल एनिमी। फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेंसिंग. You ensure that the balance of power does not get disturbed. Second option is appeasement. Fine. Appeasement is never good in the long term. So Sardar Patel was talking about balancing the Chinese threat, and Pandit Nehru opted for appeasement. Nehru also knew. So Nehru was unnecessarily talking about Panchsheel, Asian century and all. It was like postponing the problem, not handling the problem. So attitude was wrong. And biggest problem of Pandit Nehru was he wanted to avoid war. The moment you want to avoid something, it is going to happen. Okay? There is a Murphy law which says if anything can go wrong, if you think it will definitely go wrong. अगर तुम्हें डर है वॉर होगी तो होगी। ठीक है, अब ऑप्शन है अपीजमेंट वर्सेस बैलेंसिंग। तो चाइना के साथ पॉलिसी यही है, टू अवॉइड वॉर विथ चाइना यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। चाइना, अपीजमेंट ऑफ चाइना इज नॉट हेल्पफुल। तो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट का सबसे बड़ा कॉस्ट दैट वी पेड was 1962 war. So non-alignment, India is now doing alignment with USA because if your opposite party is strong and you yourself is not matching, you have no other option but to go for alliance. So India did alliance in 71, but India should have done it in 40s itself. So the biggest failure of non-alignment policy is that 1962 war, and because of 62 war we had to face 65 war. Fine. So tomorrow we'll continue with this.